माइक्रोब्लेडिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर दीज डेज जिससे हम आपकी आईब्रोज को एक अच्छी डेंसिटी दे सकते हैं, अच्छी शेप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि माइक्रोब्लेडिंग क्या होता है। I am Dr. Sunish Goyal and I am a cosmetic and plastic surgeon practicing at Lavanya Laser and Plastic Surgery in Jaipur. आपकी eyebrows आपके face का एक is a very prominent feature of your face which give a definition to your facial lines. लेकिन कई बार आप बड़ा लो फील करते हैं कि आपकी आईब्रोज घनी नहीं है, आपकी आईब्रोज के आर्चेज अच्छे नहीं हैं, उसका शेप ठीक नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं जिसे माइक्रोब्लेडिंग कहते हैं। दैट अदर ऑप्शन वी डू हैव इज़ गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ द आईब्रोज, बट दिस माइक्रोब्लेडिंग इज़ मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर and it is cheaper than your hair transplant procedure. Basically, microblading is a sort of semi-permanent makeup. जो सेमी परमानेंट मेकअप हम कई बार आपके हेयर डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी करते हैं, जिसे हम सब स्कल्प माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं, या इफ़ यू आर हैविंग सिगरेट लिप्स, डार्क कलर लिप्स, तो उसमें आपके लिप्स को एक पिंक अपीयरेंस देने के लिए, एक हेल्दी अपीयरेंस देने के लिए भी हम सेमी परमानेंट मेकअप का यूज़ करते हैं। सो दिस माइक्रोब्लेडिंग इज़ ऑल्सो ए सेमी परमानेंट मेकअप। माइक्रोब्लेडिंग में एक बेसिकली हम एक टैटू इम्प्लांट करते हैं आपके आईब्रोज में इन वेरी नेचुरल वे, so it gives a denser look to your eyebrows. It gives a more arched look and better shape to your eyebrows. So whenever you are going for microblading, first thing you should know who is doing microblading. Is your cosmetic surgeon or aesthetician is doing a lot of microblading, then only you should know his result, कि उनके रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। यू शुड सी द प्री ऑफ एंड पोस्ट ऑफ पिक्स ऑफ द पेशेंट्स विच ही हैज़ डन माइक्रोब्लेडिंग। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने टेक्नीशियन, अपने एस्थेटिशियन को पहचानें। माइक्रोब्लेडिंग में बेसिकली एक हैंडल, एक लाइक ब्लेड टाइप की चीज़ होती है। ब्लेड एक पैन होता है, पैन के आगे एक निब होती है और निब में कुछ माइक्रो नीडल्स या माइक्रो ब्लेड्स लगी होती हैं। So with this micro blades, we scratch your eyebrow area. इससे पहले ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग आपके आईब्रो की मैपिंग करते हैं। इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स कि आपको कहाँ पे हमें आर्च देना है, कहाँ आपकी आईब्रो की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, किस शेप में होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में आपके बाल या आपके आईब्रो के हेयर दिखने चाहिए। So with this pan, nib and micro blades like thing, we scratch your eyebrow part, and after putting some local anesthesia in form of numbing cream, or even being a plastic surgeon, we can sometimes give a local anesthesia to your eyebrow area. So after numbing or giving a local anesthesia, we scratch your eyebrow area with these fine blades, and simultaneously we implant very highly specialized dyes or color in your eyebrow area so that it can give a denser look to you. The only thing which is important to use it is to be done by a qualified cosmetic surgeon, and the equipments and dye which he is using should be of a very good quality. माइक्रोब्लेडिंग से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम एक हफ्ता पहले कोई फेशियल या फिर कोई भी फेशियल ट्रीटमेंट ना लें, जैसे डर्माब्रेजन्स, पील्स, एंड इफ़ यू आर यूजिंग सम रेटिनॉल्स देन यू शुड अवॉइड रेटिनॉल बिफोर दिस माइक्रोब्लेडिंग, even after microblading for at least 2 weeks. So when we do microblading, first we anesthetize your area with the numbing cream,
and even sometimes we put local anesthesia, and then that we do microblading. After the microblading, you can develop some swelling and pain, but for that we give some analgesics, and this swelling disappears in 2 to 3 days. And initially your eyebrows look very dense, very dark, but after 5 to 7 days it gives you a very natural appearance, because after that color it fades a little bit, so it gives a very natural look to you. And microblading we usually do in 2 sessions. Like after giving first session, we repeat the same thing after 6 weeks, so that it can persist, or this microblading effect persist for at least 2 to 3 years after that, if you have taken 2 sessions. What are the things to be taken care after your microblading? The most important thing is don't wet that area. If you want to clean it, you have to maintain hygiene. If you want to clean it, just clean it with the normal saline, but avoid any sauna bath or swimming, heavy exercise for at least 7 days. Then don't pick the scabs. Don't pick the scab with your hand. That all the scabs will fall themselves in 7 to 10 days. You have to apply some medicated ointment for 7 to 10 days. Then you have to avoid direct sun exposure, and you can wear some sunscreen on the other part, and as well as over the eyebrows, so your color of microblading doesn't fade away. Keep your hair away from your eyebrow area, and keep avoiding sleeping on your face down, and don't use any facials and facial scrubs for at least 10 days. That final result you will see after 1 month and so, and that gives you really a pleasing appearance of your face, having a good eyebrows, what you wanted from a long time. So the advantage of microblading is that it is giving you a very pleasing appearance. Then as there is no downtime, and if you see your daily preparation time for eyebrows and makeup, it takes around half an hour to set your eyebrows, and you have to bear the cost of those makeup kits. And in long term, if you see that because that microblading persists for 2 to 3 years, or your result persists for 2 to 3 years, then overall that microblading is not a costly affair. So thank you, and stay beautiful.